तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो देखो, हम इस सबसे पहले तो अपन करेंगे जनवरी 2025 का पेपर Q2 का, है ना। सो लेट्स स्टार्टेड विदाउट फर्दर अडू। अच्छा, तो ये पहला पेपर है, इसका देखो और पेपर आएगा जो दिसंबर 2024 का होगा। ट्राई करूंगा मई वाले का, बट डोंट होल्ड मी टू इट क्योंकि उतना टाइम नहीं मिला है मेरे को, तो कंफर्म नहीं है, बट आई विल ट्राई। ओके, so let's just start. Okay, so first question is, consider the Java code given below that prints the maximum element of a set. Okay, so we need to get the maximum element from among the options. Identify the appropriate function header. Okay, so we want the function header for function find max that takes a input a set of numbers. Okay, it takes a set of numbers as input and prints the maximum element of the set. Okay, so ठीक है। सेट ऑफ नंबर्स में बेसिकली मतलब क्या होगा, नंबर्स का मतलब क्या, वी कैन थिंक ऑफ एज अ क्लास जो कि हमारा नंबर्स क्लास है, जिसमें इंटीजर, डबल और बिग डेसिमल आता है ना। वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट। ओके, तो लेट्स सी हमारा फंक्शन कर क्या रहा है। हाँ, लेट्स गो टू द फंक्शन। सो देखो, यहाँ पे हमारा फंक्शन हेडर है, तो इसको वी कैन स्किप फॉर नाउ। ओके, वी सी द मेन फंक्शन, है ना। सो मेन फंक्शन में क्या है, वी हैव टू हैश सेट्स and both of them are of different types. Okay, data types. Basically, first is the integer hash set of integers and second is hash set of doubles. Then तो उसका मतलब क्या हुआ, so we need something of a function that can handle both integer and double, है ना। हम दो फंक्शन को लिखेंगे नहीं, we will only write one function. Okay, and we need it to be able to handle both integers and doubles. So अगर याद हो, so what we can do, we can use a type parameter, that is the t thing. Okay, t extend something like that. Okay, or wildcard if let's like one of the two. Okay, so what we will be using here, we will be using wildcard or type parameter, and given the options we will be using both. Okay, so see what will be the type parameter that we give. Like we know that t. Okay, but general t, if we like say this or this, we say this, then it will just take that generic any t. Okay, for example any object, but we do not want any object. We know that it will only work with a set of integers or a set of doubles. Okay, according to this question at least, that it will only work with a set of integer or doubles. So what is the superclass of both integer and doubles? So we can say that number. Okay, so number is a superset of both integer and double. So we can set it like t extends number. So what this ensures is that it can work with anything as long as it is a subclass of number. And same goes for question mark. Question mark extends number. Okay, so this also means it can work with anything as long as it is a subclass of number. Okay, so these are the two things you can do. Okay, let's go to the options. First is set t, that we already said that set t means that it can only work, like it can work with a generic set of objects and it can work with anything. Okay, so instead of that we want it to be able to work with a set of number. Okay, so we set t extend number and then we say set add of t. Okay, so this t and this t become same. Is basically if you are saying that here t extends number, then this t will also extend numbers. Okay, so after that using wildcard, how we specify that using wildcard, we say question mark extends number. So both of these things mean the same thing, that the function can work with anything as long as what it is working with is a subset of number, that is either a big decimal or a double or a integer. Okay, so that is the first question done. Let's go to the second question. Second question just says that we have been given a Java code and we have to see the correct option. Okay, so since we have to see that line 1 or line 2, we do not need to go to the options directly. We can just see the main function first. Okay, so this thing comes from the week 1 to 4, whichever I was 4, I guess. So if you do not know, parent subclass is fine, parent is fine, subclass is fine, but subclass parent is not fine. Okay, so parent and subclass, this is fine, no need to worry about this. o1.deliver. Okay, so now we are calling the deliver function on a deliverable object. Okay, so deliverable class, or rather interface in this case, has the method deliver. So this is fine. And when it at runtime, when it says that it actually contains a food order, it will also check the food order and it will check that it also has a deliver. So it will call the actual method, actual object it contained, in this case which is food order. So it will just print delivered successfully. Okay, so this is your first line of output. Okay, but second thing, it tries to call o1.track. Okay, so forget everything else.
what like if you do not remember, I'm explaining this. If you do not remember, if you remember this, you can just skip ahead. Okay, basically if those who already remember, basically deliverable that class does, that interface does not have track method defined. Okay, now if you do not remember, stay with me. So as soon as you see this type of questions, circle these things: deliverable and food order. Then compare these things only: deliverable, food order. So we saw that the method deliver is present in the interface deliverable, so that is fine. That's why the first line didn't give you any type of error. But as soon as it goes to o1.track, it tries to call the track method on a deliverable object, but but deliverable class or interface in this case does not have a track method, so that's why it will give you error. So o1.track actually gives you error. O1 is of type deliverable and holding food food order object, and track absent in deliverable. Okay, so that's why this will be wrong. Okay, and this will give you error. Basically o1.track gives you error. So this program generates compilation error because o1 of type deliverable cannot invoke method track because it is not defined in that. Okay, in which case it would have been correct if even if we had even if we had a track method just defined here without any nothing, like without any implementation, even if we just defined it, then also it would have worked. Okay, but since it wasn't the case, that's why it is wrong. Okay, next question. Following code maps a set of patients to the number of visits, basically meaning patient whatever, patient ID, whatever it is, and then it visits. Okay, visits is an integer or a number. Okay, so it maps this thing, patient ID to visit. Okay, they have made to a hospital and categorizes the patient based on whether they are regular visitors. Okay, so and after map, how does it map? Then it's check that if the visits are greater than 3 visits, then they are categorized as regular visitors or else occasional visitors. Okay, so we have two tree sets, R patients and O patient, basically for regular patients and occasional patients. Okay, and remember that these both are tree sets. Okay, so this is just checking. Okay, now see that we have these people, okay, that we want to add. Okay, these people that we want to add. Okay, so what it does, okay, first thing it tries to add. Okay, as soon as you say pmap.put, it goes on to the check. Okay, it goes to the put method. Sorry, it actually puts the entries inside that. Okay, so when it tries to when it goes inside to put them, after that basically firstly it creates a hash map of these. Okay, so first it creates a hash map, and then we create the tree set as we saw above. Okay, so first we make a hospital object, and then we call the categorize patients with this hash map like we just created. Okay, as input. Okay, so now let's go to the categorize patients. Okay, see what it does. It is just checking if the visits are greater than 3, then it is adding to the R patients, and if it is not the case, then it is adding to the O patients. Okay, that's all it is doing. But what is the catch here? The catch comes that tree sets always sort in alphabetical order. Okay, this comes from week 6. Okay, week 6, check the week 6 notes. I have a table there. Okay, at the last page, check that table, sort in alphabetical order. Okay, so all in all, you do not need to go through that much code. You just need to see which all are firstly regular and which all are occasional. Okay, so as soon as you see that only 2 of them are patients, regular patients, so you just sort them based on the alphabetical order. Okay, tree set always sorts in alphabetical order. Okay, so that's all it is doing. Okay, then you check Ram, Tanya and Eva, and so first will be Eva, second Ram, third Tanya. Okay, that's all it is doing. Okay, I also explained you the code what it is doing, but you did not really need to go into the code. If you just see it from a bird's eye perspective, then you will just get what the code is trying to do. Okay, and that's all you have to do. Actually, you do not you have to practice well enough that you know by a bird's eye perspective that what it is doing. Especially if you have more than one subject, then this becomes especially crucial for you. Okay.
Okay, so next thing is cloning. So cloning, as we saw, or two types. Shallow copy. Shallow copy just copied the instance variables. It did not copy the shared resources. Second is deep copy, which copied everything. Okay, and by default, clone method which we had, it used shallow copy. Okay. So see, there is no specific deep copy code here, so it will revert to the default implementation, that is shallow copy. So it copies instance variables but not shared resources via pointers. Okay. So what it means now, that every car has its own mileage. Okay, every car has its own mileage, because there is no shared resource here. There is just one instance variables, and every car gets that, whether it is shallow copy or deep copy. Okay, so C1 and C2 both have their own mileage. Okay. Okay, spelling is wrong, but forget. Okay, so first thing, we are creating a new car with a mileage of 25. Okay, then we are cloning it. Okay, how we are cloning it. So sorry, how we are cloning it, so it becomes 25 after, and then we are changing. Okay, sorry, what we are changing, we are changing car 1's mileage to 30. So will C2 get changed? No, because this is an instance variable which will be copied in the shallow copy also. So it will not be 30, but rather it will be 35. So what we are returning at the end, so we are just printing that the sum. So 30 plus 25 becomes 55. So 55 will be our output. Okay. Okay, next thing. Okay, so in this code, what you have to do firstly, choose the correct option to fill in the place of line 1. Here is a line 1. Okay, so that the output is Tagore, Amitabh, Shahrukh. Okay, see, you need to print these things. Okay, these three people, and what is the common thing here? Both, all three of them are greater than 5. Okay, basically this thing. Okay, you can see it here, that it is filtering based on less than 5. Okay, so you have to print greater than equal to 5. Okay, because if you print like for example, if you just print here, then it will just print those who are less than 5. Okay, but we do not need that. We want the persons or people who have experience greater than 5. Okay, greater than equal to 5. So what we need to do, this is checking if the experience is less than 5. Okay, so in this array, we have both type of people who have more than 5-year experience or less than 5 year or equal to 5. Okay, so if I just remove this less than 5 experienced peoples, then I am just left with greater than equal to, which are these three things. Okay, so basically what I need to do, since I am checking in the code that it is less than 5, I need to remove the people who are less than 5. So and at last we can just print them. Okay, so how to remove them? Firstly, this is an iterator. Okay, as soon as you see iterator, you can just call the iterator.remove. Okay, that's all. Okay, we have an iterator it here, so we can just call the sorry, this one is the iterator, and that is the usage. Sorry, this is the declaration. So we can just call the it.remove, and it will remove the current iterator. Okay, iteration from that. Okay, we have seen the remove method in our theory lecture, so I'm not going deep in there. Okay, it.remove a. Okay, so a remove function of iterator does not take any input. Okay, so it will just be this. Okay, a list is nothing here. Okay, a list नाम से कुछ है ही नहीं यहाँ पे एक है artist. Okay, and that is the only list here. Okay, that is the only list here. Okay, a list नाम से कुछ है ही नहीं पहली बात. So okay, so next question is try catch का. Okay, so try catch में क्या होता है? We gracefully send the errors. Okay, we do not let the program crash. Okay, so program चलता रहता है, but we try to gracefully interrupt, है ना, ताकि program crash ना हो. Okay, let's go. So question क्या है हमारा? Question is choose the correct option. Basically हमसे ये बाद में पूछ रहा है कि आउटपुट क्या होगा, हमसे ये पूछ रहा है. सो आउटपुट क्या होगा, तो सबसे पहले मेन पे चल जाओ. लेट्स गो टू द मेन एंड सी व्हाट इट इज डूइंग. सो फर्स्टली इट इज ट्राइंग टू प्रोसेस द सैलरीज एंड इट इज कैचिंग if there is any error. That is all that the main thing is doing. Okay, now we see what process salaries is doing, which is basically our
main function on which it depends. Okay, so process salaries, firstly it calls to calculate salary function calls. Does two function calls to call salary with two different set of inputs. Okay, so जब पहला इनपुट जाएगा क्या होगा वो, सो पहला सेट है 50,000 और 10,000 का, दूसरा सेट है 60,000 और -5,000 का. ओके, सो इट विल गो टू द कैलकुलेट सैलरी फंक्शन. ओके, फंक्शन कॉल पे जाएगा. एंड फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल में क्या हो रहा है, सो फंक्शन कॉल इट इज फर्स्ट चेकिंग इफ द बोनस इज लेस देन 0. ओके, बोनस इज द सेकंड. ओके, बोनस इज सेकंड फील्ड. ओके, सो बोनस सेकंड फील्ड. ओके, तो मतलब चेक करें कि बोनस नेगेटिव है क्या. तो अगर बोनस, नाउ लेट्स सी ईच फंक्शन कॉल. ओके, वन बाय वन. सो फर्स्टली विल चेक दिस. सो 50,000 है एंड 10,000 है एज बोनस. ओके, सो क्या 10,000 नेगेटिव है, नहीं है, सो इट विल नॉट थ्रो एन एरर, इट विल जस्ट प्रिंट द सैलरी विद द बोनस. ओके, सो 50K प्लस बोनस दैट इज 10K which becomes 6 no sorry यहाँ पे प्लस नहीं कर रहा हूँ, नेवर माइंड. टोटल सैलरी इज जस्ट नहीं कर रहा हूँ, नेवर माइंड. टोटल सैलरी विच इज BS प्लस बोनस. ओके, सो 50 प्लस 10 becomes 60K. ओके, 60K. So this is your first line of output, 60,000. Okay. अब now let's see the second function call. Second function call में क्या हो रहा है, second function call में हमारे पास है 60K और -5K. Okay. अब -5K यहाँ पे दिक्कत देगा आपको. Why? Because bonus is checking if the function is if the bonus is negative. So since it is negative, it will throw a new error. What will be the message? Message क्या होगा एरर का? एरर का मैसेज होगा इनवैलिड बोनस. तो जैसे ही हमने थ्रो किया एक नया एरर, थ्रो को पकड़ता कौन है? कैच बेसिकली. सो कैच ब्लॉक यहाँ पे कहाँ दिख रहा है? कैच ब्लॉक इज देयर. ओके, सो क्योंकि यहाँ पे ट्राई हो रहा था, ये चीज ट्राई हो रही है, तो इसका कैच ब्लॉक इस एरर को कैच करेगा. तो क्या किया, कैच क्या किया, कॉट इन मेन. इसने कुछ यूज नहीं किया लाइक ईट और गेट मैसेज है कुछ, इसने बस नहीं सॉरी ये लास्ट में कॉल होगा, सॉरी. देखो यहाँ पे कॉल हुआ एंड देन यहाँ पे एरर थ्रो हुआ. तो जो व्हेन दिस थ्रोज एन एरर द कंट्रोल रिटर्न्स टू दिस फंक्शन बैक. सो यहाँ का कैच ब्लॉक पहले एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो पहले यहाँ पे है इनवैलिड बोनस, यहाँ से हमें मिला कॉट इन प्रोसेस सैलरीज, दैट विल बी योर सेकंड लाइन ऑफ आउटपुट. ओके, यहाँ पे मैंने लिख रखा है सी है ना. तो आफ्टर दैट इट थ्रोज अनदर ई. ओके, सो वापस इसने ई को थ्रो कर दिया. ई वहीं से चलता रहा है ना, ये ई यहाँ से चल रहा, प्रोपागेट हो रहा है. ओके, तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा, नाउ दिस फंक्शन कॉल विल रिटर्न द कंट्रोल टू दिस एंड यहाँ पे कैच ब्लॉक एट लास्ट एग्जीक्यूट होगा विच इज बेसिकली लास्ट स्टेप, दैट इज ई, एंड इट विल प्रिंट कंटेंट मेन. ओके, सो 3 लाइन ऑफ आउटपुट मिलेंगे. फर्स्ट फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन, सेकंड जो पहला कैच ब्लॉक है वहां से, एंड थर्ड इज द फाइनल कैच ब्लॉक जो मेन के अंदर है. ओके, सो 3 तुम्हारे लाइंस बनेंगे एंड 3 तुम्हारे एरर मैसेजेस होंगे. बेसिकली 2 तुम्हारे एरर मैसेज होंगे, 1 सक्सेसफुल मैसेज होगा. ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, इसमें बेसिकली तुम्हें वही पूछा है. ओके, कि क्या कितने मैसेज आएंगे, क्या आउटपुट होगा बेसिकली. सो लेट्स सी. फर्स्टली वी आर ट्राइंग टू रजिस्टर. ओके, दो यूजर्स को वी आर ट्राइंग टू रजिस्टर. सो जैसे ही हमने रजिस्टर पे कॉल किया, वी कॉल द फंक्शन रजिस्टर. व्हाट इट डूज, इट चेक्स. ओके, इफ द ईमेल डज नॉट कंटेन दिस वर्ड, इट थ्रोज एन एरर, or else it just prints registration successful. That's all it is doing. So you just need to check the users that are trying to register. Okay, so the first one is this anu.kurian@x.com. so we can see that the email contains at the word at. Okay, so we can just say that it will be successful. Okay, so this user will be able to register successfully, but this user will not be because at is missing here. Okay, so success, and then this will fail. So first one will be success, which will give you this line of output, and second will be your catch, which will basically print this error message. Okay, so there will be 2 lines of output. Okay, there will be 2 lines of output. First will be successful, second will be error. Okay, so after that, consider 2 Java files located in different packages. Okay, so these type of question where the private, public, those methods are there, like those visibility modifiers are there, give special attention to the question statement. Okay, क्योंकि अलग अलग में अलग अलग है ना. यहाँ पे अगर सेम पैकेज होता तो आंसर बदल जाते, इसलिए check what it is saying. So in our case, in this specific question, it is saying that different packages. What it means that this package and this package are completely different. Okay, fine.
अब हम देखते हैं कि एक्चुअली व्हाट इट इज डूइंग. ओके, सो यहाँ पे प्राइवेट है, एक मेथड बी मेथड हमारा प्राइवेट है, सी मेथड प्रोटेक्टेड है, डी मेथड पब्लिक है. ओके, क्या कर रहा है वो इससे मतलब नहीं है. व्हाट इट इज डूइंग नन ऑफ आवर कंसर्न, एंड दिस इज आवर डिफॉल्ट मेथड विच इज आवर package private or whatever the name is. Okay, so let's see what our method is doing. Okay, so this is our second package. Okay, it is extending class A. Inside this package there is a class which is extending the class A. So okay, so what all will it be able to call? Okay, so first is super.a method. A method was default. Now where can we call the default method? Default methods are accessible only in the same package, and what the question statement has told us that they are different packages, basically meaning a.java and b.java are different packages, or or not a.java b.java, but pack1 and pack2 are different packages. Okay, so since they are different packages, so the package 2, which is basically housing the class B, cannot access the super.a method. So accessible within package only, and so it will give you error. So line 1 gives you error. Line 2 will, everyone knows line 2 will give you error because this is private, and B method basically, which is private, and we are trying to call the private method, which will give you an error, obviously 10 out of 10 times. Okay, now comes the second important thing, which is the C method. Okay, so C method will not give you error in this case. Why? So C method is being called inside from within the class B, and class B is a subset subclass of class A, which actually houses the C method. Okay, so basically meaning class A has the C method. Okay, and class B is a child of this, and the calling is happening from within the class B. Okay, that's why it is fine. So protected methods क्या है कि protected methods can be called either from the same package. अगर same package में हुआ तो obviously इनका call हो ही जाएगा, है ना. And second is if it is being called from a class which is a subclass of the class which is housing the protected method. Okay, protected method जिस class के अंदर है, इवन अगर अलग पैकेज से कॉल हो रहा है किसी और क्लास के अंदर से, बट जो क्लास कॉल कर रहा है वो क्लास शुड बी अ सब क्लास ऑफ द क्लास जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट मेथड है. ओके, थ्योरी में मैंने और अच्छे से समझा रखा है, सो थ्योरी को देख लेना, बाकी मैंने यहाँ पे बता दिया. तो हमारा लाइन 3 एंड लाइन 4 द पब्लिक है, सो लाइन 4 इज पब्लिक, नो इज देयर. सो देयर विल बी 2 एरर्स which is line 1 and line 2. Okay, okay, next is consider the code given below. We have just been asked that which assert statement will fail. Okay, so see, there are two things. assert statement को देखने के लिए तुम्हें इतना देखने की जरूरत नहीं कि कोड क्या क्या कर रहा है, जस्ट लुक एट द assert statements. Okay, तो assert statement को देखोगे ना तभी तुम्हारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर आएगा. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब बस मेन में जाओ, फर्स्टली यू गो टू मेन एंड जस्ट कीप चेकिंग फ्रॉम देयर. ओके, एज एक एक assert statement आता जाता है एंड जस्ट कीप चेकिंग देम. ओके, सो फर्स्ट assert statement हमारा यहाँ पे आया. ये क्या असर्ट कर रहा है कि करंट टेम्परेचर ग्रेटर देन इक्वल टू -100, और करंट टेम्परेचर मतलब -100 से 150 के बीच में होना चाहिए करंट टेम्परेचर, जो कि हमारा है ना. करंट टेम्परेचर हमारा 35 है, जो कि है, तो इट इज फाइन. असर्ट 4 हमारा कुछ एरर नहीं देगा, इट इज फाइन. उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं टेम्परेचर डिफरेंस को. टेम्परेचर डिफरेंस को हम कॉल कर रहे हैं, तो हमारा ये टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन है. वी गो हेयर. So as when we go inside it, we see that the first assert statement is the same as we checked below, so it will be also be correct, so no issues there. assert 1 ठीक है. assert 2 भी वही चीज चेक कर रहा है कि -100 से 150 के बीच में हो. दिस इज ऑल्सो फाइन क्योंकि हमारा करंट टेम्परेचर और आइडियल टेम्परेचर दोनों हमारा इसी रेंज में है. अब दिक्कत अब क्या आ रहा है, हमने जो क्या कहते हैं डिफरेंस है दैट वी फाउंड आउट which comes to -2. अब ये assert statement देखो, ये क्या कर रहा है, दिस इज चेकिंग इफ द डिफरेंस दैट वी जस्ट फाउंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नॉट, बेसिकली मीनिंग इफ इट इज अ पॉजिटिव और नॉट. ओके, सिंस वी गॉट -2 which is negative, this assert statement will fail. Okay, so the assert statement that fails is assert 3, so assert 3 will fail. Okay, fine. Next question is, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है जैसे वीक 1 to 4 से क्विज में आया था. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू कॉल अ स्पेसिफिक फंक्शन व्हिच इज शो वॉशेबल. मतलब ये दिस क्वेश्चन इज ट्राइंग टू print these lines. FLW is washable and TLW is washable. Okay, so to print this, what we want, we need to call the show washable function. Okay, how we call that? So see, we are running a for loop.
Okay, so how do we call a specific method on every element inside a list? For here we have the list, so I'm taking the list. Okay, so on every element in the list we use the for loop and we access it by the index. Okay, so हमें index से पहले access करना पड़ेगा. हमारा लिस्ट का नाम क्या है? अप्लायंसेस. सो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है एप सेट आई. सो ये हमारा एक्सेस हो गया एंड हमें उस पे शो वॉशेबल का कॉल करना है. ओके, शो वॉशेबल हमें फंक्शन कॉल करना है. बट शो वॉशेबल किसके अंदर है? देखो क्लास क्या है? फ्रंट लोड वॉशर, टॉप लोड वॉशर. ओके, बट हमारे यहाँ पे लिस्ट में हमारे पास दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके, वी डू हैव बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड दैट, सो वी नीड टू मेक इट work for both of them. How do we do that? Firstly, see that it is returning an object type. Okay, sorry, it is of general object type. Okay, and basically general object array. So we need to typecast it, obviously will be returned, and typecast to washable. To be able to call these methods, we need to typecast it. Okay, so if we typecast it as front load washer, then it will only work with the first entry. If we typecast it as a second top load washer, then it will only work with the second unique case. But to make it work with both, we can typecast it as a super class. Okay, so that's why we first typecast it as a super class and then call show washable on it. ये काफी मैंने क्विज में काफी क्वेश्चन ऐसे हैं, then so we have solved it there. तो इसलिए मैंने इतना इस पे ध्यान नहीं दिया. Okay, next is just to check. Okay, see देखो यहाँ पे इन क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं करना, just keep doing what it is saying. Okay, so first is we are starting an infinite stream. Okay, not infinite stream, we are just starting a stream. Okay, for now we are just starting a stream. Okay, हमने यहाँ पे stream start किया. Okay, ठीक है, थोड़ा और लंबा कर लेते इसको. Okay, second मतलब सॉरी, स्ट्रीम स्टार्ट किया. स्ट्रीम में क्या हो रहा है? पहले था वो 50 से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम 50, एंड उसके बाद जो भी होगा, जो भी नंबर्स आएंगे उसमें से 5 माइनस हो जाएगा. ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम 50, कीप सब्ट्रैक्टिंग 5. ओके, सो कैसे चलेगा ये? 50, 45, 40, 35, 30 ऐसे चलता रहेगा. ओके, 50, 45, 40, 35 ऐसे चलता जाएगा, है ना. एंड देन वी आर मैपिंग इट. मैप मतलब हमने एक स्टैंप लगा रखा है यहाँ पे, जो हर मतलब हर एलिमेंट के ऊपर अपना थप्पा लगाएगा. थप्पा क्या है हमारा? मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय 2. ओके, सो मल्टीप्लाई कर दो, 100, 90, 80 चलता रहेगा ऐसे. ओके, फाइन. आफ्टर दैट वी आर फिल्टरिंग. फिल्टर हम किस बेसिस पे कर रहे हैं? मतलब हमने छन्नी लगा रखी है. छन्नी हमारी क्या कर रही है? और ऐसे सिर्फ ऐसे एलिमेंट्स को पास करने दे रही है जो कि डिविजिबल बाय 4 है. तो इसमें से तुम देख लो कि डिविजिबल बाय 4 कौन से है? 100 है, 80 है. एंड एट लास्ट वी आर लिमिटिंग टू 4. मतलब इसमें से मतलब फिल्टर में से जो पहले 4 नंबर्स पास होंगे, हम वी विल ओनली टेक दोज 4. ओके, तो देख लो पहले 4 कौन से पास हो रहे हैं. तो इस केस में 100, 80, 60, 40. ओके, 100, 80, 60, 40. ओके, इस तरह से तुम्हारे स्ट्रीम के क्वेश्चन होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर जावा कोड गिवन बिलो. क्या आउटपुट होगा? ओके, सो आउटपुट में हम क्या कर रहे हैं? हम दोनों सेट्स को प्रिंट कर रहे हैं. ओके, जैसे तुम्हारे ऐसा लंबा लंबा क्वेश्चन है ना, तुमने देखा ना कि एट द एंड तुम्हें करना क्या है. तुम बस दोनों सेट्स को प्रिंट कर रहे हो. ओके, तुम दोनों सेट्स को प्रिंट कर रहे हो. अब सेट्स क्या है? नाउ व्हाट आर सेट्स? ओके, we have two sets, which is set 1 and set 2. What are those? So first one we have linked hash set, and second is tree set. Okay, what is the specific behavior that is unique to these two? Linked hash set preserve insertion order, and tree set it orders alphabetically. Okay, these are the unique behaviors of these two sets. Okay, and the common behavior is only unique because both are sets. Okay, it will only contain the unique elements, obviously, because both of them are sets at the end. Okay, so सिंपल है बस. देन आफ्टर दैट यू जस्ट नीड टू चेक. ओके, इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या हो रहा है. यू गॉट द बेसिक आइडिया दैट हम एट द एंड हम कर क्या रहे हैं. तो जस्ट नाउ कीप चेकिंग. ओके, सो फर्स्ट चेक फॉर सेट 1. सेट 1 में क्या है? फर्स्ट वी आर एडिंग फर्स्ट वी आर एडिंग एप्पल, देन सैमसंग, देन नोकिया, देन अगेन सैमसंग. ओके, सो सिंस दिस इज अ डुप्लीकेट एंट्री, सेट 1 में ये नहीं रहेगा. लिस्ट में भले ऐड हो जाएगा, दिस लिंक लिस्ट इट विल कंटेन दिस, बट एट द एंड उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद वी आर एडिंग दिस to set. Okay, this linked list to set. Okay, तो वहां पे ये हट जाएगा. Okay, so set 1 will contain Apple, Samsung, Nokia in this specific order only because linked hash set preserves the insertion order. और ये बातें तुम्हें कहाँ पता चलेगी? ये तुम्हें पता चलेगी वीक 6 के जो लास्ट वाला टेबल है उसमें, जो मैंने बनाई है. सेकंड, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? सेम चीज कर रहे हैं, बट इन दिस टाइम वी हैव अ ट्री सेट. ओके,
Now tree set, what it will do, it will sort based on the alphabetical order. Okay, so first we have Apple, so then we will have Nokia, and at last Samsung. Okay, so Apple, Samsung, Nokia for set 1, and Apple, Nokia, Samsung for set 2. Okay, Apple, Samsung, Nokia, Apple, Nokia, Samsung. Okay, fine. अब क्या कर रहे हैं हम? Consider the given code below. Choose all the option which can be used in place of arg. Okay, arg in, अच्छा यहाँ पे, okay, arg in line 1 so that the code outputs the same two roll numbers. Okay, so basically we have to get the output. Okay, तो अब यहाँ पे output लेने के लिए what we need to do, we need to check कि यहाँ पे what is the specific type of input parameter that we pass. Okay, we are type parameter that we pass. Okay, so see what we need, instead of just jumping to the code and checking from first that what you have to do, just check one thing, that it is working with something, but we are in, like यहाँ पे क्या है, we are checking that roll number is an integer type. Okay, we are checking an integer type. Okay, fine. So यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, what should be here. Okay, सेम होना चाहिए एटलीस्ट, है ना, तो यहाँ पे इंटीजर तो होना ही चाहिए. ओके, इंटीजर तो होना ही चाहिए. लाइक टाइप ऑफ इतना आइडिया तुम्हें लग रहा है, लाइक आई एम ट्राइंग टू टीच यू के फटाफट कैसे आंसर निकालते हैं, है ना. रोल नंबर इंटीजर, एंड यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट पास करना है. सो व्हाट कैन बी वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स, वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी इंटीजर इटसेल्फ. ओके, इंटीजर पास किया एंड इंटीजर के साथ ही वो इनपुट, सॉरी बेसिकली इनपुट में इंटीजर ले रहा है, रिटर्न इंटीजर कर रहा है. फाइन, ये हो सकता है. ओके, और क्या चीज हो सकती है, और कुछ जेनरिक हो सकता है टाइप ऑफ, अगर तुम चाहो, है ना, मतलब वाइल्ड कार्ड कुछ. ओके, बट वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का वाइल्ड कार्ड होगा. ओके, एक और चीज क्या हो सकती है, अगर तुम ऊपर देखो टी एक्सटेंस नंबर. ओके, टी एक्सटेंस नंबर, तो तुमने एक ऊपर बाउंड यहाँ पे अपर बाउंड लगा रखा है कि गारंटीज ओनली नंबर. ओके, सॉरी, हाँ, गारंटीज ओनली नंबर्स यह हमने ऊपर में कर रखा है. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी गारंटीड दैट इट विल ओनली हैव नंबर्स. ओके, so now t has a upper bound. Okay, so since we have the upper bound, what we can do, we can just use the t itself. Okay, basically meaning we can just use t itself. Okay, yeah, t है ना, we will just use t itself. Okay, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है ना, टाइप ऑफ तुम्हें आइडिया लग गया कि क्या क्या हो सकता है. नाउ गो टू द ऑप्शन एंड चेक डायरेक्टली. ओके, फर्स्ट इज रोल नंबर, टी और आर, मतलब ये आर तो बस बेसिकली दैट इज बीइंग पास्ड. ओके, इसके दैट इज नथिंग. रोल नंबर टी इज द मेन थिंग. हमने अभी देखा कि टी हो सकता है. वाई? बिकॉज टी वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड द अपर लिमिट. ओके, सो व्हाट दिस मीन्स दैट इट कैन वर्क विद अनदर रोल नंबर विद सेम टाइप एज आर. बेसिकली मीनिंग जो आर है तुम्हारा, वट एवर द आर इज, इट कैन वर्क विद दैट टाइप ओनली. मतलब अगर आर इंटीजर है तो टी विल ऑल्सो बी इंटीजर. ओके, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि इट कैन वर्क विद एनीथिंग. Okay, as long as it is belongs to the number class. Okay, as long it is belonging to the subclass of numbers. Okay, fine. ये तो तुम्हारे दो तरीके हो गए. अब सेकंड इज वाइल्ड कार्ड. ओके, हमने ध्यान रखना कि हमने ऊपर जो क्या ओनली नंबर्स, ये हमने ऊपर अपर लिमिट लगा रखी है ना, सो इट कैंट क्रॉस दैट. लाइक हम ऑब्जेक्ट के साथ काम नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड द upper limit. Okay, so what this means is anything of number type, both of these, what this means that they can work with, like the function can work with anything as long as the whatever it is working with is a subclass of number. Okay, so int value is available to all number types. Like so this becomes important also, that whatever function you're actually trying to call, like the int value, it should be available to every number. Okay, so int value is available to every number. You not have to worry about that, and we are not putting anything in our just reading. Okay, so that's why wildcard also works. Okay, so wildcard, working of wildcard is dependent on two things. Firstly, that int value is available to all number types. Second is we are just reading. Okay, so this function, okay, like sorry, this input that we are taking, we are just getting something. Okay, we are not processing that. Okay, that's why wildcard works well. Okay, we are not processing anything on R, like whatever, let's say we have a 200 roll number. In this part we are just getting the roll number. Okay, we are just getting the roll number from R. We are not changing that R dot roll is equal to, or R is equal to 300, we are like 400. We are not doing anything like that. Okay, R plus equals 100, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हम, ना. We are not doing any processing on it. We are just reading. That's why the wildcard works. Okay,
सो इसलिए तुम्हारे ये दोनों ऑप्शंस होंगे. okay? बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि व्हाई दिस डज नॉट वर्क. एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि रोल नंबर इंटीजर एंड रोल नंबर नंबर, बेसिकली ये जो लाइन है तुम्हारा, बेसिकली जो हमारा ये लाइन है, बेसिकली यहाँ पे इंटीजर, यहाँ पे नंबर, दिस डज नॉट वर्क एक्चुअली. रोल नंबर इंटीजर एंड रोल नंबर नंबर आर नॉट कंपैटिबल इन जावा जेनरिक्स. ओके, तो ये जावा जेनरिक्स है, दीज आर नॉट कंपैटिबल विद अनदर इन स्पेसिफिक एक लाइन के अंदर, है ना. मतलब जिस तरह से हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इट इज नॉट कंपैटिबल लाइक दैट. ओके, next question is given code below should print the number of water filters whose flow rate falls within the range. Okay, so basically हमें बहुत सारे मान लो टैब के नाम दे रखे हैं. We have been given a lot of tab names. We just want to sell those whose water flow rate is in this range. Okay, so क्या कर सकते हैं? What is a good way to check? First is arbitrary way that for each tab you check the water flow, or second thing is you make a stream and apply a filter. Okay, so see, we have these all these tabs, let's say, or water filter, let's say. First, what we need to do, we need to create stream. Okay, second, we need to filter on some filter based on this condition, and third is we need to print each of them. Okay, and now just check which option matches all these three, like does all these three things. Okay, filters.stream, it is creating this, fine. Okay, and then applying the filter, that is fine, and this is printing. Okay, fine, this is stream, that's fine. Okay, this is mapping. Okay, we do not need to map, like it will basically mapping, what it will do, it will apply these things on each element. We do not need to apply, we need to filter based on that. Okay, like choose this or choose that. हमें थप्पा नहीं लगाना, हमें छन्नी लगानी है ना. We need to filter based on some condition. Okay, ठीक है, तो फिल्टर फॉर एच. ओके, फाइन. नेक्स्ट इज सेम थिंग, बस दो फिल्टर लगा रखा है. यहाँ पे हमने ऐड के साथ एक ही फिल्टर लगा लिया. यहाँ पे हमने यहाँ पे हम बेसिकली हम दो छन्नी लगा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ वन छन्नी हम दो छन्नी लगा रहे हैं. पहला वाला ग्रेटर देन 5 दे रहा है, दूसरा वाला लेस देन 15 दे रहा है, इस तरह से, है ना. बस दैट्स ऑल द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the Java code given below. How does marks example look of a type erasure? Type erasure क्या है? ओके, बाकी मैंने इसको थ्योरी में समझा रखा है. टाइप इरेजर इज जब भी हम जावा जेनरिक या फिर टाइप पैरामीटर यूज करते हैं, जैसे टी एक्सटेंड नंबर, व्हेनेवर यू यूज दीज थिंग्स लाइक दिस, और द वाइल्ड कार्ड थिंग, Java does not remember that. Okay, Java does not remember that, and when it is running time, that basically run time, it just convert that to the upper limit. Okay, whatever the upper limit is, basically extends के बाद जो भी है उस पे upper limit पे वो remove कर, मतलब upper limit पे वो upgrade कर देता है एक तरह से, है ना. So हमसे बस पूछा है कि रन टाइम के बाद हमारे ये जो क्लास है और फंक्शन है ये कैसे दिखेंगे. ओके, सो तुम्हें कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जस्ट लुक एट व्हाट द अपर लिमिट इज. ओके, देखो यहाँ पे टी की अपर लिमिट क्या है, नंबर. ओके, सो टी यहाँ पे नंबर बन जाएगा, ठीक है, बस दैट्स ऑल यू हैव टू डू. टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे इसका कोई अपर लिमिट नहीं है, जिसका कोई अपर लिमिट नहीं है उसका अपर लिमिट ऑब्जेक्ट है. ओके, जेनरिक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो यहाँ पे टी विल बिकम एन ऑब्जेक्ट नाउ. ओके, सो दीज टू फंक्शन डन, एंड सेम थिंग हैपेंस फॉर दिस. ओके, टी एक्सटेंड्स नंबर and list t, so basically this will contain numbers, and this will also contain a list of numbers. Okay, so the upper limit is number for these both, and the upper limit for this is object. So t is treated as number on runtime, and all generic info is removed. What are generic info? This is generic info, this is a 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 generic info. All of these generic infos are removed. So यहाँ पे देखो जो t external number था वो हट गया, यहाँ पे object आ गया. This is wrong. Okay, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं आएगा. फर्स्ट एंड लास्ट विल बी नंबर. ओके, सो यहाँ पे नंबर आ गया. देखो यहाँ पे जो वो टी एक्सटेंड्स था दैट इज रिमूव्ड, एंड दैट इज द जेनरिक इन्फो दैट इज बीइंग रिमूव्ड, एंड टी ये जो जेनरिक इन्फो है दैट इज आल्सो रिमूव्ड विद द नंबर. ओके, सेम हैपेंस फॉर दिस, यहाँ पे ये हट के यहाँ पे नंबर हो गया. सेम हैपेंस फॉर दिस. This thing didn't have a upper limit, so the anything that doesn't has a upper limit specified, it is being upgraded to the absolute superclass that is object. Okay, so यहाँ पे इसलिए ऑब्जेक्ट मिल गया. सो दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. ओके, फाइन. हाँ, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. तो इसी के साथ तुम्हारा Q2 ऑफ Jan 2025 कंप्लीट होता है. गो थ्रू द PDF वंस. ओके, या ऑल द बेस्ट. एक और वीडियो आएगी इसी के बाद, है ना. सो 2 PYQ तो हो गए, एंड 3 का मैं ट्राई करूंगा, बट लाइक PDF तो आ जाएगा, है ना. PDF तो आ जाएगा रात तक, बट वीडियो का मुश्किल है. मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, वीडियो का मुश्किल है ना. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फॉर Quiz-2, एंड या